Welcome to HTML optimization for an on-page SEO. Now in this we are going to cover the head tag optimization, body tag optimization and URL structure optimization. So we are going to start with the header tag optimization. In header tag optimization there will be three tags that we will be covering, start from the title tag, going to description tag and then robot tag. The first one is title tag. So the title tag is used for creating the unique page's title. Generally, when you go and open any page into the browser, you will see something on the top. This will known as the page title. Then the title can list the main area of the focus for a page, particular page. It is the first thing that user watches in your search engine listing, so it should have an impact and must scream about a subject of your page. Generally, when you search for something that the page title is something that has been shown into the snippet of a search engine. So it is important because people based on to what content is available where available here. We will be clicking onto your page. So ensure that your title is one and unique, and secondly, it is most relevant to the product or the page that you have. All right. So there are a few guidelines while creating a title tag that you must follow. That is, ensure that it's unique for every page, and second must contain primary keyword. So whatever your keyword, because SEO is all about uh, adding your keyword into your title tag. Oh, all right. So what you have to do is you need to ensure if you are creating page for a bakery site, you must say bakery in whatever location. Suppose you are in Noida or Bangalore or Hyderabad, whatever you are located, that should come onto your main page or a relevant page where you are targeting your local audience. Now keep them around 60 characters. Why? Because if you are a you have a longer title, Google will truncate it and the entire content will not be available. So why to keep your title tag length in 60 characters? So try to keep your title tag length in 60 characters and avoid all caps. So you should not use entire thing into caps. Alright, keep the initial capital and optional format will be primary keyword. Primary keyword 5, secondary keyword and brand name. For an example, digital marketing agencies 5, digital marketing agency in India, smiling success enterprises. So I am not talking taking care of 60 character. I am just giving you an example here. So you can use like that. Also, if you are trying to planning to go for a title tag writing, you can look at your competitors and see how they are using the title tag and try to see the sites that are ranking, what is good and what is bad about their title tag and how you can build on it. Now let's go ahead. The next tag is description tag. So as title tag used to tell about the context of the page, description tag will give a brief summary about your page. Alright. So description tag gives search engines
the summary of your content which they will show along with your listing in the search engine result page. Therefore, description tags should focus on convincing search engine visitor rather than the acting as a place to stop keywords. So why you need to take care of it is because instead of keywords, something like best email services, top email services, Gmail is saying I am about the USPs of the products. So you need to talk about the feature of that particular pages. तो टाइटल टैग क्या होता है? टाइटल टैग बेसिकली जो हम किसी भी ब्राउजर को ओपन करते हैं, उसके कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो ऊपर जो हमें ये जैसे जीमेल प्राइवेट एंड सिक्योर ईमेल दिख रहा है, तो ये एक पेज टाइटल है। और ये कोड कैसे किया गया, ये टाइटल ऐसे डाला गया, ये आपको टाइटल HTML के सेक्शन में जाना और टाइटल के सेंटर में जो भी आपका टाइटल होगा उनको लिखना है। जैसे ये जीमेल का है, जीमेल प्राइवेट एंड सिक्योर ईमेल एट नो कॉस्ट। और वैसे ही ये टाइटल टैग सर्च इंजन में कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है जीमेल गूगल। टाइटल टैग हर पेज के लिए यूनिक होना चाहिए और प्राइमरी कीवर्ड उसको आपको प्राइमरी कीवर्ड डालना है और 60 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए आपके टाइटल टैग में। नहीं तो आपका जो ये जैसे जीमेल डैश गूगल दिख रहा है आपको, ये पूरा पूरा आपका अगर कोई भी 60 कैरेक्टर से ज्यादा लिमिट के अगर टाइटल होगा तो वो यहाँ पे शो नहीं कर पाएगा पूरा सही तरीके से। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपका टाइटल टैग हमेशा 60 कैरेक्टर्स के अंदर रहे। तो आपको कैप्स लॉक्स को अवॉइड करना है और सारे उसमें लिखने के लिए। व्हाट इज डिस्क्रिप्शन टैग? तो डिस्क्रिप्शन टैग आपको कुछ इस तरीके से दिखता है अगर आप सर्च करते हैं। तो जो भी आपको इस टाइटल टैग के नीचे वाले दिखता है, नीचे दिखता है, तो वो आपका डिस्क्रिप्शन टैग होता है। डिस्क्रिप्शन टैग के लिए कोडिंग आप HTML कोडिंग पे जाके मेटा नेम सर्च करके डिस्क्रिप्शन के बाद सेंटर में उनको जो स्पेस होगा वहां पे आप डिस्क्रिप्शन टैग लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन टैग भी यूनिक होना चाहिए हर पेज के लिए आपके। एंड वो डिस्क्रिप्शन टैग बेसिकली आपके पूरे पेज का समरी होता है जो आपको 155 से 160 कैरेक्टर के अंदर लिखना है। और डिस्क्रिप्शन टैग में प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड आप दोनों इंक्लूड कर सकते हैं। So what people can expect now, writing the description tag, ensure it is unique for every page and it must summarize your page and highlight the key points. Must contain primary and secondary keyword and it's relevant to the page. It's between 55 and 160 characters. So the next is report tag. By default, it is index. That is, every page that created will be indexed by Google into its search directory, as well as all the links that are there on the page will be followed by the Google crawler. But in case you are creating a landing page that you would not want to rank on the Google, or you would don't want to it, give crawler access of any of the link, and you do not want to suggest crawler to crawl any of the link that are available on the page. So you can make it no index and no follow. So if you only do no index and keep it follow, then it will make not index and but follow all the link availables. If you do both, it will not index as well as not follow any of your link that are given. If you do index but no follow, it will index the page but it will not follow any of link that are given on the page and crawl them. तो बेसिकली रोबोट टैग कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि
गूगल हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है और इसी के जरिए रोबोट टैग से ही वो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है। और इसमें आपको नो इंडेक्स नो फॉलो और बाय डिफॉल्ट इस पे बाय डिफॉल्ट हमारे जो कोडिंग सेक्शन होता है उसमें फॉलो और इंडेक्स पहले से रहता है। अगर आपको नो इंडेक्स और नो फॉलो करना है तो आप ये कर सकते हैं बाद में अपने हिसाब से। फॉलो करने से आपके जो भी लिंक्स होंगे एक पर्टिकुलर पेज पे पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो फॉलो करने से वो सारी वेबसाइट वो लिंक्स फॉलो होती है। और अगर आप नो फॉलो करेंगे तो वो सारी लिंक्स को वो नो फॉलो करेगा। और इंडेक्सिंग से वही मतलब है, जैसे आपको इंडेक्सिंग पहले बताया कि वो गूगल अपने डाटाबेस में आपके वेबसाइट का डाटा स्टोर करता है, तो आपकी वेबसाइट का डाटा वो स्टोर नहीं करेगा अगर आप नो इंडेक्स करते हैं तो। और उनको मतलब आपके जब आप इंडेक्स करेंगे अपनी वेबसाइट को तभी वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेंगे। So based on what you need, you can add this tag into the meta section. So these are the generally added into the head section. All these tags, what we talked about, whether it is a title tag, whether it is a description tag, or it's a robot tag. All three are added into the head section, and that's why we named as we named them as a head tags. All right. So this tag also will be added into the head section. It's not a mandatory by default. It's index and follow, but if you want to change it only, then you can add it. So it's used for controlling access for the search engine reports. Body tag optimization. As you know, as you already know, in HTML there are two sections, head and body. We have already covered the SEO tags that were important for head section. Now we will talk about the body tag optimization. In this we will have three tags: anchor text, image tags, and heading tag. So let's start with the anchor text. So anchor text or tag is basically a guidance to readers. It helps reader to know that what is the link that they are about is to click is all about. So use anchor text to guide readers. Use keyword as anchor text. Maintain a healthy variable anchor text linking ratio toward each page. And do not over optimize a page for only a single keyword in anchor text. So let's understand what is it is. Generally, when you are reading certain articles, you might see something like you can buy shoe online at discounted price, and this text in blue is in anchor text. At all discounted product and this section in the blue anchor text. And generally, if you are linking a page of shoes, then you should clearly mention what is page all about. So as a great SEO practice, what you must do is should always try to link your page with a relevant empty text. So what will happen is while Google is crawling at Google will know this page is about buying shoes online. Like this is a domain www.xyz.com/shoes, and this is one page you can buy shoes online at discounted prices. And this is second page, largest collection of shoes online is available at XYZ. You can must check it. So buy shoes online and largest collection of shoes online. These are the anchor text. Yes, right, Kajal. Anchor text are the link of the specific word which we can redirect.
So let's go back to our next tag. Our next tag is image optimization. Guys, generally when you have lot of images or if you have an e-commerce website where you have a lot of images, it's important to tag each image because Google crawler does not scan the context of your image. It generally read the image or tag that's behind it. Alright, image source is equal to form which the image has been coming or highlighted. Their alt is equal to image all tag. Close and tag closer. So what happened in this area? You need to give keyword. You have to put the image all tag here. I have marked the red. तो आपको यहाँ पे अपना जो भी इमेज का टैग है उसको यहाँ पे ये कोडिंग फॉर्मेट है इस कोडिंग फॉर्मेट में इमेज ऑल टैग हेयर जहाँ लिखा है उस जगह पे आपको अपना जो भी इमेज का ऑल टैग है उसको पुट करना है if suppose this image is about shoes you will mention shoes if image is about cake you will mention cake if this image about red pastry you will say red pastry generally what happen if is you should use also optimize your image with a relevant alt tags so that is given a great signal to Google. That's what all page is about. The images that appear on the particular page is about. So using the right alt tag will further boost your ranking. So what you have to do is ensure that all the images on your website are again having the right alt tag. If you use the WordPress automatically, when you upload the image, it will ask you about the alt tag. Just mention in the plain English text what the image is all about. So the next tag is heading tag. So what heading tag actually does, it used to basically orient your article better. Uh, if you remember when you used to do essay writing during school days, first we have to write the pointers and then we used to write about all the things. So generally what happen is by heading you can define the purpose of the particular article and the subsections and paragraphs can be added as the subheadings. So heading can be given from H1 to H6 with H1 being the most important thing. Generally the most important thing in the particular page is the title. What this page is about all about. So H1 can only be used once. You can't use H1 twice on any of the page. However, all the other tags can be used as many times as you want. And generally we divide the paragraph and subparagraphs using the particular tags. By default, Google will come to know that everything that's coming under H2 will a part of it unless a bigger tag is encountered or equal. So under H2, this is the content. So this is all the content related to this. Again, H2 will come and will come. So Google will know, okay, so the new tag is started. Everything that's coming under it is part of this. Now H1 is the biggest content. So everything that is coming here is a part of this. So this is how we orient this particular tag while creating the content.
and this is the what we suggest to use. So always try to use the H1 whenever we are creating the content, and based on the length of your text. You might use it 2 or 3. So basically हेडिंग टैग ऑप्टिमाइजेशन में क्या है, जैसे कि आप ब्लॉग्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं अपनी वेबसाइट्स पे, तो आपको उनमें सब सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ता है। और जैसे कि यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, ये हेडिंग है इसकी, और ये हेडिंग टाइटल जो होता है वो H1 में होता है। हमारी वेबसाइट में टोटल H1 से H6 तक टैग्स होते हैं, H1 to H6 टैग्स होते हैं। तो H1 बाय डिफॉल्ट टाइटल के लिए होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, और ये आपकी एक ब्लॉग में, एक आर्टिकल में एक ही बार यूज होगा। और बाकी H2 से लेकर के H6 तक जो भी टैग्स हैं, ये आपके आप यूज कर सकते हैं एक बार से ज्यादा भी। और ये H2 है, H3, H2 ये भी है। आप H1 के बाद जो भी आप यूज करेंगे वो H2 H3 ऐसे होंगे, और ये एक सिस्टमेटिक फॉर्म में ही चलेगा। आप H2 से पहले H3 का यूज नहीं करेंगे, और H3 के ये जो H1 H2 H3 H4 है, ऐसे ही आपको अपने आर्टिकल्स लिखने हैं। जो हेडिंग्स होगी वो H1 H2 H3 इन्हीं में होगी, और उसके बाद आपके पैराग्राफ्स आएंगे जो भी आपको लिखना है अपने ब्लॉग्स से रिलेटेड। So the next is structural and URL optimization. Very important thing. So whenever you are creating URL, try to use the keywords in your URL. Try to create categories and subcategories. You might have seen an e-commerce website that they always have these categories. For example, home and kitchen, and under home and kitchen, they have home appliances, and then you will have a various home appliances. It will be washing machine, different home appliances can be under it. With this, there are two benefits. One, Google know that everything that will coming under a home and kitchen section, and it will help people to understand the prioritization. For example, Flipkart shoes. Then it will have categories like man shoes, woman shoes, kid shoes, and under man shoes it will could have casuals in etc. So by using the keywords here into the URL, you are further boosting the chances of ranking up, rather than using a category with only names and not defining the keywords. So try to keep your keyword in your URL. So basically आप जब कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं या कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो आप इस तरीके से देखते हैं अपनी कोई भी लिंक को। जो यूआरएल होता है आपका इस तरीके से कुछ दिखता है, अगर आप उसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं तो। जैसे एक CAT कैटेगरी आईडी सब कैटेगरी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी, तो इसको हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। और इसको ऑप्टिमाइज करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। होम किचन के अंदर में है होम अप्लायंसेस एंड वॉशिंग मशीन्स। तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन से ही मतलब आप इसमें अपने कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं जिनके थ्रू आप रैंक करना चाहते हैं आप अपने पर्टिकुलर पेज को, वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और ये देखने में भी अब पहले से बेटर लग रहा है, नहीं तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, क्या चीज नहीं है। तो इसलिए आपको अपने यूआरएल को हमेशा ऑप्टिमाइज करके रखना है। ये आपके रैंकिंग में भी हेल्प करेगा अगर आप सही कीवर्ड्स यूज करते हैं, और देखने में भी ये सही लगेगा। इससे लोगों को मतलब पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है, ये कौन एक पर्टिकुलर पेज कौन से रिलेटेड क्या शो करना चाह रहा है। So the next and the last thing for this particular slide is defining your website structure. Guys, when you are doing SEO, you need to have a pre-defined structure of your website.
look at the example on the screen. So this website has got home, then it will have services, it will have a blog and a contact page. So URL is mysite.com for services. It is mysite.com services. For blog, it is mysite.com blog, and contact us, it is contact. Now services are gaining three categories, two categories, one categories and category two. So for that, it will be mysite.com service category one. What could be whatever name it is. For an example, we are talking about mom's bakery. The example that we have taken now I can have my bakeries my bakeries dot com cake. Now I can have designers cakes and I can have regular cakes, all right, or I can have eggless cakes or normal cakes. So now if somebody is looking for eggless cakes, obviously I will use keyword related to the eggless cakes only and only on that particular page and not a normal cake page, because people want if they are wanting, they are looking for something, they want to land onto the particular specific page. So we will optimize my page that says mybakeries.com cakeless for traffic that needs to be diverted on page. And I would not use any other page. I would not target any other page to ranking for that, because it will create confusion. So guys, super clear with your structure. Be clear, super clear with these services that you will be using, and try to keep one primary and two secondary keyword for a particular page. And don't try to rank one page for multiple keywords, because then you would be able to would not be able to rank for it. So just keep all this thing in mind. So वेबसाइट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन में हमें अपनी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करना होता है कि हमारी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस होंगे, कौन कौन से सब कैटेगरीज होंगे। ये सारे स्ट्रक्चर हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हमारी वेबसाइट में होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया मॉम बेकरी केक का, एक केकरी बेक है कोई, एक एग्जांपल लिया हमने, और उसके अंदर में जैसे नॉर्मल केक हो सकता है, एवरेज केक हो सकता है, और अलग अलग केक्स हम ऐड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ब्लॉग्स डाल सकते हैं। तो इन सब का अलग अलग एक पेज बनेगा, और एक पर्टिकुलर पेज को हमें एक ही प्राइमरी कीवर्ड पे रैंक करना है। एक मल्टीपल कीवर्ड हमें यूज नहीं करना है किसी भी पेज को रैंक कराने के लिए। अगर आप मल्टीपल कीवर्ड्स यूज करेंगे तो आपकी वेबसाइट उतनी सही तरीके से रैंक नहीं कर पाएगी। तो एक पर्टिकुलर पेज को रैंक करने के लिए आपको एक प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है और दो सेकेंडरी कीवर्ड यूज करने हैं। और एक जैसे कि एगलेस केक, आपने एगलेस केक के बारे में अगर आप बता रहे हैं तो उसमें आप रेगुलर केक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं डालेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आपका कोई कस्टमर एगलेस केक के पेज पे विजिट कर रहा है तो उसको एगलेस केक ही चाहिए होगा। तो आप अगर रेगुलर केक के बारे में इंफॉर्मेशन डालेंगे तो उसके लिए इरेलेवेंट होगा, और हो सकता है कि वो आपकी वेबसाइट से चला भी जाए वो, ये ऐसी इंफॉर्मेशन देख के जो उसके काम की नहीं है। So this is all about for today's session.